In the previous lecture, we have learned KCL and KVL rules. KCL is Kirchhoff's current law and Kirchhoff voltage law. Using these rules, in this circuit we have to find the voltages across these elements, across the sources and across these resistance, and the current from these resistances. तो सबसे पहले हम पैसिव साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए इस सारे सर्किट के साइन लगाएंगे। पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक यहाँ से करंट एंटर होगा, वहाँ हम पॉजिटिव पॉजिटिव यूज़ करेंगे, और यहाँ से लीव कर रहा है वहाँ नेगेटिव। यहाँ करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब जो रेजिस्टेंसेज के साइन है वो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर तो जो वोल्टेज हम जब केवीएल से इसके वोल्टेजेस निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो इसका मतलब है ये जो साइन है वो ठीक है, अदरवाइज ये साइन उलट होंगे। यहाँ पर भी हम पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इन रेजिस्टेंसेस में से करंट फाइंड कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये I1 है, ये I2 है और ये I3, इसे हम I4 कह देते हैं, ये I5 है और ये I6। पहले हम इस नोड के ऊपर KCL लगा देते हैं। KCL क्या कहता है कि सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ नोड इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर ये करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से ये करंट लीव हो रहा है, प्लस है तो प्लस में करंट एंटर होगा, इस वजह से ये डायरेक्शन होगी, और ये करंट लीव होगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, I5 एंटर हो रहा है, एंटरिंग करंट को मैं पॉजिटिव दूंगा और लीविंग करंट को नेगेटिव। ये करंट लीव हो रहा है, इसका नाम I1, इसे लीव कर लेते हैं। I1 लीव कर रहा है और I4 भी लीव कर रहा है, एंड ये अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। I5 की वैल्यू हमें पता है 2 एम्पेयर, I1 हमने फाइंड करना है, और I4 की वैल्यू भी पता है 3 एम्पेयर, विच इज इक्वल टू 0। तो -I1 को उस साइड पर ले जाते हैं, और 2 - 1 एम्पेयर इज इक्वल टू I1। एक अननोन करंट हमारे पास आ गया। इसी तरह इस नोड के ऊपर, नोड बी के ऊपर, ये नोड ए कंसीडर, यहाँ पर KCL लगाएंगे तो ये करंट इसमें से लीव कर रहा है, ये करंट एंटर हो रहा है, और ये करंट पॉजिटिव में करंट एंटर होगा, तो यहाँ से ये साइन I3। तो KCL इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, I4 एंटरिंग, I4 और I3 भी एंटरिंग, I3 is also entering, I6 is leaving, so I6 will be negative and sum is equal to 0. We know the value of I4 which is equal to 3 ampere, I3 is unknown, and minus I6 is 5 ampere which is equal to 0. So I3 minus 5 plus 3 minus 2 ampere is equal to 0, and I3 is equal to 2 ampere. Applying KCL to this node C, at node C, this is entering, this is leaving, and this is also leaving. So I1 is entering positive, I2 is leaving, so minus I2, and I3 is also leaving, minus I3 is equal to 0. We know the value of I1 minus 1 ampere plus I2 is unknown, and I3 is equal to 2 ampere, and the algebraic sum is equal to 0. So I2 is equal to minus I2 minus 3 ampere is equal to 0, and I2 is equal to minus 3 ampere. We have find the current from these three resistances I1, I2 and I3. Now we will find the voltage across them, V1, for example V1, V2 and V3 using Ohm's law. V1 is equal to I1 multiplied by R1. I1 is equal to minus 1 ampere multiplied by R is equal to 100 ohms, so it comes minus 100 volt. Similarly V2 is equal to I2 multiplied by R2. I2 is equal to minus 3 ampere multiplied by R2 is equal to 50 ohms, so it comes minus 150 volt. Similarly V3 is equal to I3 multiplied by R3. I3 is equal to 2 ampere
multiply by R3 is 100 ohms, it comes 200 volts. These are the voltages across these resistances. We have found the voltage across these resistances. Now we will find the voltage across the current sources using KVL. To find the voltage across the current sources, we will use KVL. And KVL, what KVL says? KVL says the algebraic sum of voltages in a loop is equal to 0. So in this loop, we consider voltage across the source as VA. This is minus 100 volt from this, and this is minus 150 volt V2. Using KVL, we will write the KVL equation. Starting from this positive sign in the clockwise direction, positive sign comes first, so we will take it as positive VA plus, because this is plus sign, so plus minus 100 volt plus minus 150 volt across this resistance, and the algebraic sum is equal to 0, so VA is equal to 250 volt. This is the voltage across this source. Similarly, in loop 2, we will write the KVL equation starting from here. For example, VC, positive sign comes first, so we will take it as positive, plus VC minus the voltage across this resistance is minus 150, and plus the voltage across this resistance is 200 volt. The sum is equal to 0, so VC minus plus 150 plus 200 is equal to 0, so VC is equal to minus 350 volt. Now we will write the KVL equation for loop 3 starting from here, VB, then minus voltage across this resistance, it is equal to 200 volt minus 200 volt, and then minus voltage across this resistance minus 100 volt, which is equal to 0. So VB minus 200 minus plus 100 is equal to 0. VB is equal to, this will be minus 100, and on the other side it will become positive 100 volt. This is the voltage across this source. We have find all the unknowns of this circuit. The voltage across this current source was unknown, so we find it, and the voltage across this circuit, across this current source is VB, which is equal to 100 volt. Across this VA, which is equal to 250 volt. Across this is minus 350 volts. Across this resistance, we have 200 volts. Across this resistance, we have minus 100 volt, and across this resistance, we have minus 150. Now, this is V2, this is minus 150, and this is 200. So, and the current from this resistance is also known. The current from this is minus 1 ampere. The current from this is equal to minus 3 ampere, and the current from this is equal to 2 ampere. Now this is 2 ampere, and this is minus 3 ampere. So all the unknowns are known. I hope you will have understand how to use KCL and KVL to find the unknowns of the circuit. Thank you.